आई नो नो वन आस्क्ड, पर ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कैमरा के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पर अब सब चंगासी। रोल इंट्रो। जी हाँ, पब्लिक सर्वेंट, जिन्हें पब्लिक को सर्व करना कम, उन्हें खुद सर्वेंट समझना ज्यादा पसंद। अब ये वीडियो तो देखी होगी आपने। इसका तो चेहरा दिखना चाहिए अगरतला को। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्विस ऑफ ड्यूटी अरेस्टिंग। कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद है क्योंकि बहुत कम ही होता है हमारे देश में कि अमीरों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, पर अमीर भी आम आदमी ही तो है। इंडिया में हमेशा से ऐसा सिचुएशन रहा है कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन को डर की नजरों से देखा जाता है। अब सिस्टम ऐसा है कि इट इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ fear and disrespect among the citizens rather than care and respect। ऐसे कम केसेस नहीं मिलेंगे आपको जिसमें आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव, जैसे पुलिस ऑफिसर हो, कोई IAS IPS ऑफिसर हो, अपने पावर्स को अब्यूज कर रहे हैं, इससे लोगों को हरास कर रहे हैं और अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं अपनी अथॉरिटी का। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड डिस्कस वेयर आई फेल्ट दैट द त्रिपुरा DM वाज रॉन्ग। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। First, the sheer aggression and brutality with which the DM raids these marriage functions and disrupts them is brutal। हम सबको पता है कि एक मैरिज जैसे फंक्शन का क्या इम्पोर्टेंस होता है हमारे कल्चर में, और इस फैशन में एक ओकेजन को, एक फंक्शन को डिसरप्ट करना इज नॉट कूल। आई फेल्ट इट कुड हैव बीन हैंडल्ड इन अ मच मोर पीसफुल एंड सिस्टमैटिक वे। नंबर 2, which I felt was the most ironical point of it all। देखिए, इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है बोल के कि आप कोविड नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन DM खुद जाके लोगों को मैन हैंडल करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बोलते हैं लोगों को डंडे बरसाने के लिए। वेयर वॉज द सोशल डिस्टेंसिंग? क्या वहाँ कोरोना नहीं फैल सकता? एंड थर्डली, आई थिंक इससे हमें पता चल जाता है कि DM शैलेश कुमार यादव की मेंटालिटी कैसी है, द सिक मेंटालिटी ही हैज। आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टेंसेस पे वो बोलते हैं थिंग्स लाइक, आर यू अ ब्लडी विलेजर, आर यू एन अनएजुकेटेड पर्सन, एंड दिस मेक्स मी वंडर व्हाट ही रियली थिंक्स अबाउट बिलोंगिंग फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया। टोटली डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द रूरल सेक्शन ऑफ आवर कंट्री। फाइनली हम बात कर सकते हैं एक ऐसे प्रॉब्लम की जो हर जगह एग्जिस्ट करता है, डबल स्टैंडर्ड्स। देखिए, मैं लॉ के बारे में उतना तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर पता है कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द रूल ऑफ लॉ सेज। पर इंडिया में द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज बैड। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर है, उसने हेलमेट नहीं पहना, उसका चालान नहीं कटता, लेकिन अगर कोई आम आदमी हेलमेट नहीं पहनता, उसका भर के चालान कटता। सिमिलरली, पॉलिटिशियंस, पब्लिक फिगर्स रैलीज में या फिर पब्लिक गैदरिंग्स में मास्क नहीं पहनते, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आम आदमी अगर रोड पे अपनी कार के अंदर भी मास्क नहीं पहना हो तो उसका चालान कट जाता है भर भर के। द सैड थिंग इज, पावर्स होते हुए भी हमारी एग्जीक्यूटिव, पब्लिक फिगर्स या पॉलिटिशियंस पर एक्शन नहीं लेती। अभी हाल ही में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को उनकी पुलिस ने फाइन लगाया क्योंकि 3 ज्यादा लोग आ गए थे उनकी बर्थडे पार्टी में। पर यहाँ पे PM तो क्या, CM तो क्या, कोई अपने लोकल MLA का भी चालान काटे तो उस पर। तो ये तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस थी फ्रॉम माय साइड जो मैंने नोटिस की इस टोटल हैपनिंग में। अब इसमें एक लीगल पर्सपेक्टिव डालने के लिए आई हैव इनवाइटेड माय गुड फ्रेंड साई आशीष, जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर तो नहीं है पर एक लॉ के स्टूडेंट जरूर है। ओके, सो वी हैव विद अस टुडे माय गुड फ्रेंड साई। साई को आपने जस्टिस फॉर इंडियन मीडिया वाले वीडियो में देखा होगा, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा, मेक श्योर टू चेक इट आउट। आई में मैंने डाल दिया है। So, Sai, what do you have to say about the entire fiasco? So, my take on that particular night when the district magistrate came, or rather barged into that festivity, was that. So in order to understand the legal nuances attached to it and the crux of the matter, we first need to understand that what rights do we possess as a citizen, and necessarily what rights do we possess as a member in that gathering. And after knowing that, we can then discuss that what rights of us were violated. The Indian Constitution under Article 19, it is enshrined, of course, the fundamental rights. So Article 19, 1B speaks about the freedom
to assemble peacefully without arms. It is a right which is guaranteed to us, but like every other right, this is not an absolute right. It is limited in nature, and it has reasonable restrictions attached to it. The section 144 or the order 144, which the district magistrate has been seen talking about, is a part of such reasonable restriction. The district magistrate went all hyper and using all his profanities shot back in quite a very callous manner. Please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. In my opinion, such a statement coming out of a mouth of such a person who holds such an esteemed post, when you make such remarks which shows that you are casting aspersions on the totality of Indian villagers, it's an outright insult to them. After that, the district magistrate again manhandled him, held him by his collar, told his constable to arrest him because he was interfering with public servant on duty. If someone in the right sense would have seen the video, he would know that it was blown completely out of proportion and there was no such thing at all. Sir, don't talk to me like this. I'm a surgeon. Okay. You catch hold of this guy, obstructing public servant on duty. Catch hold of him. कौन है? लाइए. Hey, Saroj. Also, the district magistrate in this video is seen ordering the arrest of women. Does the district magistrate not know that women cannot be arrested until and unless they are accompanied with a woman or female constable? Has he not read about the section 41 of CRPC, wherein it is clearly expressed that after sunset and before sunrise, women cannot be arrested until and unless there is an extraneous condition? So these are something which is very grotesque and very, they're not plausible in the eyes of people who know the law of land. The next situation is that authority vested in him, and the act that he did was very disproportionate. There was not even a remote nexus between the happening of the two. It was well within his power, well within his authority to enforce the prohibitory order for the COVID norms. But here we are discussing about the way he did it, the way he exercised the power is very authoritative, dictatorialship, and sort of that way. And also when we come to standard precedents that are set under the law, we have seen in a leading case, the Supreme Court has said that when the vials of section 144 are established in a very mechanical, cryptic or authoritative manner, then the people or the citizens who are aggrieved can go to the court or do have the recourse of going to the court for the remedy. I will highly advise the people of Agartala who have been aggrieved by such an act of the district magistrate to kindly go to the court and get himself addressed. Speaking about punishment and what punishment or what violation of the section can be attached to the district magistrate. Section 166 IPC, which talks extensively that a public servant with the intention of causing harm to any people, if he has done any of such things or disobeys the law while doing so, then he can be punished with a simple imprisonment.